हेलो एंड वेलकम टू अमजद अकेडमी। हम क्लास 12th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने सीरीज़ एलसीआर सर्किट में एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसका नाम था इम्पीडेंस। तो आज हम इम्पीडेंस क्या है उसको एक बार और डिफाइन करेंगे। उसके बाद इम्पीडेंस का फॉर्मूला देखेंगे, इम्पीडेंस ट्राइंगल देखेंगे और इसका रिलेशन फाई के साथ क्या है दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। तो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इट इज डिफाइंड एज द effective resistance या फिर अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन डिफाइंड एज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ alternating current in a given circuit. So this is the definition of impedance Z and its unit is ohm. जिस तरह से रेजिस्टेंस को हम गिनते हैं वैसा ही इसको भी हम ओहम में गिनते हैं। इसका सिंबल ये है और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसका इक्वेशन भी डिराइव करके रखा हुआ था और वो इक्वेशन था Z इज इक्वल टू इफ यू रिमेंबर द टोटल इंपिडेंस Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL minus XC bracket square. This was the formula. So in this formula, Z is the impedance, R is the resistance, XL is the inductive reactance, XC is the capacitive reactance. So you can use this as the formula. Now we will see how a impedance triangle looks like so that the things become easy for us. So यहाँ पर EMF across resistor that we will take it as ER is equal to I0 into R, EL as I0 into XL and EC will be equal to I0 into XC if we are talking about the peak values. तो यहाँ पर ये ER ये ले लेंगे, अगर आप वेक्टर फॉर्म में ले रहे तो ER वेक्टर विल बी इक्वल टू I0 वेक्टर इंटू R, उसी तरीके से EC वेक्टर इज इक्वल टू I0 वेक्टर इंटू XC और EL वेक्टर इज इक्वल टू I0 वेक्टर into XL. This is what is the relation between XL, XC and R for the different EMFs. तो EMFs अलग अलग होते हैं। तो अब हम इम्पीडेंस को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम एक ट्रायंगल लेंगे, उस ट्रायंगल में हम बताएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फेज है फाई और ये जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस दैट विल रिप्रेजेंट द टोटल रेजिस्टेंस विच इज इंपिडेंस एक्चुअली Z and the base of this right angle triangle will be resistive opposition R and this will be XL minus XC and this is called as impedance triangle. इसको कहते हैं impedance triangle. It's a triangle in which we show the two resistances, the two oppositions exerted by or offered by the resistor
offered by inductor and capacitor together. And this Z stands for the impedance. If you apply the theorem of Pythagoras to this right angle triangle, absolutely you will get this equation. That is Z is equal to hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular side square. Base square, perpendicular square. So it will be R square plus into bracket XL minus XC square. And if you keep the square root, then Z will be equal to this. So absolutely this equation can be obtained by using this impedance triangle. And at the same time, you can also determine the phase. So which angle indicates the phase? This angle. If suppose I take this as A, this as B, and this as C. So I can say that angle ACB, angle ACB is equal to phi, is the phase difference. Phase difference between these two. Then at the same time I can find out the value of this tan phi. तो ये ट्राइंगल से आप फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. तो tan phi will be equal to opposite side, that is XL minus XC upon adjacent side. Adjacent side is this CB, which is actually R. So using this, I can also find out the value of this phase phi. So in this way, in this video lecture, we have discussed what is impedance Z for any circuit. We have defined it. We have given its formula. Then we have seen what is impedance triangle and what terms you should take so that you will get the equation back. And also using this impedance triangle, we have determined the phase phi also. And you must have any question, any difficulty अगर है भी आपके पास, होंगी भी, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए. कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं इसके आंसर देने की कोशिश करूंगा. तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमजद अकेडमी. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.